Friends, welcome to all of you in this online platform of Mahana Pratap Institute Sagwada. This is our third lecture in the series of Physical Word and Measurement chapter. In previous lecture, we was discussed about the fundamental forces which are present in our nature and that are gravitational force, electromagnetism force, strong nuclear force and weak nuclear force. But now in today's lecture, we are going to discuss about the comparison between all those forces, all those four forces of nature. Okay, so we are going to start our today's lecture. So as we discussed in previous lecture, there are four kinds of forces presented in our nature, and that are gravitational force, electromagnetism force, strong nuclear force and weak nuclear force. So now in today's lecture, we compare all those four forces, which force is the strongest force and what is the range of the force and what kind of the force is there, either it is an attractive force or a repulsive force. So let us start. So as you can see here, the gravitational force, electromagnetism force, strong nuclear force and weak nuclear force is represented by a comparison chart. So first, one by one we are going to discuss. So first we take the gravitational force. As you all know, the gravitational force is the force by which every object or a body is attracted by the earth. Okay, the force of attraction between the two bodies इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किन्हीं दो बॉडी के बीच में, एंड दैट अट्रैक्शन फोर्स इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, so gravitational force is a attraction force, it's not a repulsion force. Okay, and the second force is electromagnetism force. So the force between the charged particles, the force exerted between the charged particle is known as electromagnetism force. Okay, the charged particle may be positive and negative charged particle. This is the positive charge particle and this is the negative charge particle. So as you all know, between the positive and negative charge particle there is an attraction force. There is a attraction force, means we can say between the dissimilar charges there is a attraction force, or if there are both the charges are similar, that means the negative or the positive charges, so in that case there is a repulsion force. There is a repulsion force, means we can say that the electromagnetism force is attractive or repulsive both. It may be attractive or repulsive both. It depends on the polarity of the charged particle. Okay, now the third force, the strong nuclear force. Okay, this force is exerted in the nucleus. Okay, the strong nuclear force is exerted in the nucleus. Let us consider this is the nucleus of any atom, and we all know in nucleus there are two fundamental particles are present, and that are proton and neutron. Okay, so the force between proton and proton, the force between proton and neutron, and the force between neutron and neutron is known as strong nuclear force. Okay, and it is always exerted between it is always exerted as an attraction force, means we can say there is an attraction force between the proton and proton, proton and neutron in the nucleus, because in the nucleus there is a proton and neutron, two charged particles are present. ओके, वैसे तो अगर हम देखें तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में रिपल्शन हो जाना चाहिए और न्यूक्लियस फैल जाना चाहिए था, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियस फैलता नहीं है, लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होता है. ये स्पेशल प्रॉपर्टी है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी स्पेशल अट्रैक्शन फोर्स होता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में भी अट्रैक्शन फोर्स होता है, और सबके बीच में जो अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है. ओके, सो in the nucleus there is an attraction force between the proton, neutron and neutron, and that particular force is known as strong nuclear force. Now the next one is weak nuclear force. The weak nuclear force is also exerted between the proton, neutron and neutron in the nucleus, but it is weak as comparison to strong nuclear force. Okay, now next, second point, these are long range forces.
gravitational forces are long range forces because these are exerted between the celestial bodies also. अगर आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंक दिया, ओके, किसी पत्थर को ऊपर फेंक दिया, तो वो पत्थर वापस अर्थ पर आता है. ओके, मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज तक अवेलेबल होता है. ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, इसकी डिस्टेंस लॉन्ग रेंज तक है, इन्फिनिटी तक ये लगता है. ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स है, वो भी लॉन्ग रेंज फोर्स है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है. एंड द थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये शॉर्ट रेंज फोर्स है और ये लगता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर के अबाउट. 10⁻⁻15 मीटर के अबाउट ये फोर्स लगता है. कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर. और शॉर्ट रेंज वीक न्यूक्लियर भी है. वीक न्यूक्लियर फोर्स भी 10⁻⁻15 मीटर में लगता है. मीन्स वी कैन से द न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सर्टेड इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर. ओके, दिस फोर्थ पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये थोड़ा वीक होता है. मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा आ गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सेकेंड पोजीशन पर आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स. थर्ड पोजीशन पर आ गया वीक न्यूक्लियर फोर्स. एंड द फोर्थ पोजीशन पर आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्ट पोजीशन में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सेकेंड पोजीशन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स. थर्ड पोजीशन पर आ गया वीक न्यूक्लियर फोर्स. एंड द फोर्थ पोजीशन जो वीकेस्ट फोर्स है वो हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. Now the last point is that what kind of force, either it is an attractive or a repulsive force. So as we already discussed that the gravitational force is an attractive force. It is always attractive in nature. Gravitational जो हमारा force है वो हमेशा attractive है nature में, ये repulsive force नहीं है. And the electromagnetism force, it may be repulsive and attractive depending upon the polarity of the charge particle. Okay, because of the electromagnetic force is exerted between the charge particle, and according to the polarity of charge particle it may be attractive or repulsive force. And the third one, the strong nuclear force, it is attractive in nature, and the weak nuclear force also it is attractive in nature. And the weak nuclear force is act in only radioactive material. वीक न्यूक्लियर जो फोर्स है वो सिर्फ रेडियो एक्टिव मटेरियल में एक्ट करता है. एग्जाम्पल अगर हम ले रेडियो एक्टिव मटेरियल का, सो ट्राइटियम, द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन एटम. ओके, रेडियो एक्टिव मटेरियल, द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन एटम 1H3, एंड दैट इज व्हाट? ट्राइटियम. ओके, ट्राइटियम is a radioactive material which is used to make the hydrogen bomb. Okay, which is used to make the hydrogen bomb. So the weak nuclear force is exerted in only the radioactive material because of there is a mass defect. Why this is a weak nuclear force? Because of there is a mass defect in the case of weak nuclear force. Okay, now next there are some special note regarding the forces. The nuclear force doesn't acted on electron and proton. न्यूक्लियर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ले लगता है. जैसे कि हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये हमारा ऑर्बिट है. इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है. ओके, अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर, सो न्यूक्लियर जो फोर्स है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में एक्ट होता है. हमने डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में एक्ट करता है. लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो रेंज है वो है लगभग 10⁻10 मीटर. ये ज़्यादा हो गई, डिस्टेंस ज़्यादा है. न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है वो लगभग 10⁻10 मीटर होती है, और न्यूक्लियर जो फोर्स एक्ट होता है उसकी जो रेंज है वो 10⁻15 मीटर है. ओके, सो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करता है. ओके,
नाउ द न्यूक्लियर फोर्स इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. द थर्ड पॉइंट, in the nucleus there is an attractive force between proton neutron and neutron which was already discussed. Now the next point, this is a short range force up to 10 raised to minus of 15. देखो न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो न्यूक्लियॉन्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनके बीच में एक्ट होता है, न कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में. ठीक है, सो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक्ट नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 raised to minus of 10 मीटर होती है. ठीक है, बिकॉज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन द डिस्टेंस इज अबाउट 10 raised to minus of 10 मीटर एंड द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इज ओनली 10 raised to minus of 15 मीटर. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. हाउ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी plays an important role and advantages for our society. So in this topic we are going to discuss that how physics and technology plays an important role for our society and how it is beneficial and demerits it takes a demerits for our society. Okay, so as our first point, as there is a need of high efficiency steam engine, so there is new branch of physics originated which is thermodynamics. जैसे कि हमें हाई एफिशिएंसी के स्टीम इंजन की रिक्वायरमेंट रही. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद अगर हमें जैसे जैसे हाई एफिशिएंसी के स्टीम इंजन की रिक्वायरमेंट रही, ऐसे इंजन जिसकी एफिशिएंसी हाई हो, आउटपुट ज़्यादा हो, ऐसी हमें रिक्वायरमेंट रही, तो धीरे धीरे मॉडर्न फिजिक्स बनती गई और उस स्टीम इंजन में और मॉडर्नाइजेशन होता गया. सो एक न्यू ब्रांच बनी फिजिक्स की जिसमें स्टीम के और इंजन के डेवलपमेंट हुए, वन बाय वन उनकी प्रोसेस और डिटेल में हुई और नए नए हीट इंजन के बारे में स्टडी हुई, रिसर्च हुए, और वो जो ब्रांच है फिजिक्स की वो हमारी है थर्मोडाइनमिक्स. तो यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी, स्टीम इंजन के हाई एफिशिएंसी के टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी, तो एक फिजिक्स की न्यू ब्रांच बन गई और वो बन गई थर्मोडाइनमिक्स. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से फिजिक्स का ओरिजिनेशन हुआ. कुछ समझ पा रहे हो आप? क्या हुआ कि हमें हाई एफिशिएंसी के स्टीम इंजन की रिक्वायरमेंट थी, तो वन बाय वन रिसर्च होते गए और नए नए हीट इंजन का डेवलपमेंट होता गया और फिजिक्स की एक न्यू ब्रांच बन गई थर्मोडाइनमिक्स. ओके, हम इसमें भी पढ़ेंगे, अपनी 11th में ये सब्जेक्ट भी है. ठीक है, एंड द सेकेंड पॉइंट, एज वी स्टडी सेमीकंडक्टर, हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा? सेमीकंडक्टर की स्टडी करी, सिलिकॉन चिप के बारे में पढ़ा. सो देयर इज अ बर्थ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी एक्सेट्रा. सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी. अब देखो, फर्स्ट पॉइंट में तो क्या था कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी, स्टीम इंजन, हाई एफिशिएंसी के स्टीम इंजन की रिक्वायरमेंट थी. तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी और बना क्या? न्यू फिजिक्स का बर्थ हुआ. और यहाँ पे हम देखें तो हमने फिजिक्स में पढ़ा सेमीकंडक्टर के बारे में, तो सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन चिप की हेल्प से क्या बना? माइक्रो कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, मींस न्यू टेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ. लैपटॉप्स बने, एलईडीज बनी, है ना. और इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी, क्योंकि आप जानते हो कि एंशियंट डेज में क्या था, कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े थे, उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी थी. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट होता गया, डे बाय डे क्या होता गया, सेमीकंडक्टर बने. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यूज़ किए थे वैक्यूम ट्यूब्स, है ना, ट्रांजिस्टर्स वगैरह थे, उसके बाद बनी आईसी, एंड वन बाय वन टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट होता गया. तो आज हमारे पास लैपटॉप आ गया, एलईडी आ गई, पाम टॉप हथेली पर रख दे उतना छोटा सा कंप्यूटर आ गया, है ना. तो ये सब किसकी देन है? सेमीकंडक्टर की देन है, फिजिक्स की देन है. तो यहाँ पे फिजिक्स की हेल्प से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ. ओके, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी. नाउ वी गो हेड फॉर द थर्ड पॉइंट. वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हमने फिजिक्स में पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, है ना, इन फिजिक्स. सो देयर इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप, दैट इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम का डेवलप हुआ किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से. तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमने फिजिक्स में टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी, तो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी तो फिजिक्स का बर्थ हुआ.
सेकेंड पॉइंट में हम बात करें तो फिजिक्स में हमने स्टडी की सेमीकंडक्टर के बारे में, तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। थर्ड पॉइंट में हमने फिजिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके, आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग इज दी बिकॉज ऑफ द फिजिक्स। ओके, सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर आवर सोसाइटी। Okay, these are the advantages of physics and technology for our society. Now we go ahead regarding some disadvantages. What are the disadvantages of the physics and technology for our society? हमारी सोसाइटी के लिए फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सो द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल बाय विच एटॉमिक बॉम्ब इज मेड अप विच आर हार्मफुल फॉर आवर सोसाइटी। देखो, रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो डिस्कवरी हुई, ओके, रेडियो एक्टिव मटेरियल की हेल्प से एटॉमिक बॉम्ब बनते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब बनते हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। सो हमें इन रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रॉपर वे में यूज़ करना है, इसका मिसयूज़ नहीं करना है। ओके, इसका प्रॉपर यूज़ करना है टेक्नोलॉजी के लिए, एनर्जी के लिए, नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ unnecessary things like atomic bomb, hydrogen bomb, है ना। So this is the disadvantage for our society because of the physics and technology. So in today's lecture we discuss about the 4 fundamental forces and the comparison between all 4 of them, and also the physics, technology and society, how physics and technology is beneficial for our society and how it is not beneficial, or it plays some disadvantages. So this is all about our today's lecture. If you have any kind of doubt regarding this whole lecture, regarding the fundamental forces comparison and physics, technology and society, you can comment in our comment box. Your doubt will be definitely solved in our next lecture. Thank you.